Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Zishan Ali, your instructor for strategic marketing management, and currently we are studying about the second chapter, that is strategic marketing planning. The last lecture was all about the mission statement and vision statement, and I uh, best define you that how we can develop and what are the elements of mission statement and vision should look like. We discussed about the examples of different companies like Boeing, Intel, or McDonald's. So I hope you clarified or you justified your last lecture. Now today we are going to start with the corporate or business unit strategy. This is the second level, as we already decided or discussed that there are three levels: corporate level, business unit level, and the functional level. So this is the second level in which we analyze the situation analysis of the second level. Then we move towards deciding the goal of each SBU or strategic business unit. So business unit strategy, what it will be and how we can design this business unit strategy. So all organizations need a corporate strategy. It means the beginning of any organization is the cornerstone or the key point is the corporate strategy, the central scheme or means for utilizing and integrating resources in the areas of production, finance, research and development, human resources and marketing to carry out the organization's mission and achieve the desired goals and objectives. So this is the whole theme of the corporate strategy that I told you. So the central means for it means it works in a centrally located in centrally positioned business unit strategy that utilize integrate the organization's resources, carrying out the organization's mission, achieving the organization desired goals and objectives. Larger firms often find it beneficial to devise separate strategies for each strategic business unit. It means that the big companies design their own production for the separate business unit, separate production houses, separate marketing team, separate finance, separate HR for each SBU, the strategic business unit or division or product line or other profit center within the parent firm. So this is basically a individual based strategy. If you have two SBUs in the business, then you define each strategy for each SBU separately. So this strategy is a business unit strategy. What actually do it determines the nature and future direction of each business unit, that what is the characteristics and traits of that business unit and how in future that business unit will move in the market and how customer consumer attract towards that strategic business unit. So this is the whole theme of the business unit strategy. We design the business unit strategy. I hope I clarified that this is not the corporate level strategy. This is the business unit strategy that determines the nature. Number one, the first point is the nature of the business unit, that you are dealing with the entertainment products, you are dealing with the consumer products, you are dealing with the low involvement products, you are dealing with the high involvement products. And I better understand this, you better know about the high involvement products and low involvement products. The high involvement products are the products that are basically, you know, much more expensive, like air condition, like furniture. These are the expensive products that you never change in your routine life. You cannot alter your decision in purchasing after purchasing furniture or air condition. You need to analyze or involve in the product. You ask from your friends, you ask from you get information from different resources like an online, like you ask your friend about the best air condition brand. So these products needs high involvement of the consumer because decision is made once and you cannot alter your decision after purchasing that product. Once you purchase the air condition, you are unable to kick it out from your home. So the business unit strategy should be designed separately for each SBUs and the nature of that SBU. If it's a high involvement product you are dealing with, or you are attracting your consumer towards the high involvement, then the nature of SBU is different from the soap or the shampoo or any other low involvement products. Shampoo and grocery items like soaps, like we have in here, combs, like hair brushes,
like toothbrushes. These are the low involvement products where nature of product is changed from the high involvement products. So the business unit strategy determines the nature and future direction of each business unit, including its competitive advantages. Again, the word is competitive advantage because the one thing you cannot measure is the best approach of competitive advantage. If you have something new in it, unique thing, whether it's a high involvement product or low involvement product, competitive advantage is the key factor that attract your customers or consumers and give the best competition to your competitors as well. So you need to identify, I repeat about the let me repeat, the business unit strategy determines the nature and future direction of each business unit, number one thing, including its competitive advantages, number two. Number third point is the allocation of its resources and the coordination of the functional business areas that we last studied in the lecture about we discussed about I told you about the hierarchy and the diagram in which we have corporate level situation analysis, and we have business unit situation analysis, and production or marketing or finance or HR or other operational function area strategies or situation analysis. So these things should be decided or can be decided in the business unit strategy, and it's directly associated with developing the competitive or differential advantage. The word meaning is same for the competitive and differential. There is something which makes your company worthwhile, or some unique core competency that you use to develop the competitive advantage. So essentially the same corporate strategy in small businesses, because there is no SBU division, there is no strategic business unit. So the small companies has one product or one single entity to deal with. So the corporate level strategy is similar for the uh, whole business unit, the small businesses that have no separate SBU strategy. So single branded solution across multiple markets, we develop business unit strategy for the small businesses. If we talk about Sony for example has a number of SBUs, including the consumer products and services group like computers and home entertainment, and the professional device and solution group like semiconductors. They sell semiconductors, they develop electronic gadgets and whatsoever. The music entertainment, they develop movies, they develop Sony Entertainment House in Colombia, Sony Pictures as well, which design or produce the movies or music. Sony Mobile Communication that develop the multimedia and phones and telephones, and especially the Sony Financial Holdings that deal with the finance as well. So these are the SBUs of Sony. I repeat that there are multiple SBUs of Sony. I take an example of Sony, that multiple different strategies for each SBU. Sony developed separate business unit strategy for consumer products like computers and home entertainment, separate strategy for professional devices like semiconductors, separate strategy for Sony music entertainment like record labels, and separate strategy for Sony Pictures like movies, Columbia TriStar Studios, like Sony Mobile Communication like mobile multimedia and telephones or cell phones. So these are the different SBUs that Sony has, and they develop the separate business unit strategy for their SBUs. So separate means their nature is different, their future directions are different, their competitors are different, their production houses are different, their marketing strategies are different, their operational activities are different, and even the supply chain and raw material is different. So when each and everything is changed and different, so differential competitive advantage should be achieved. So these are the things that you must know, that business unit strategy is not for single all over company. It's developed for each and every separately, each for each SBU separately. So we need to know that what is the basic nature and future direction of each SBU. So I hope you will better understand कि आपको ये clarify हो गया होगा कि business unit strategy is the central part which you use for अलहदा अलहदा एस बी यूज़ के लिए आप बनाते हैं, और अलहदा एस बी यूज़ की सेपरेट स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करते हैं, और उसको डिफरेंशियल और कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए आप उसका प्रोडक्शन, मार्केटिंग और ऑपरेशनल और ईच फाइनेंस और एच आर सेपरेट डिज़ाइन करते हैं, और आप बेस्ट कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए परफॉर्म करते हैं. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड.
that is basically the functional goals and objectives. So functional goals and objectives is the marketing and all other business functions must support the organization's mission. As we have different functions in the company, हमारे पास different functions वर्क कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, अगेन एंड अगेन मैं जब फंक्शन की बात करूँगा तो ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होंगी, सो आई मस्ट नॉट रिपीट इट अगेन एंड अगेन. सो ऑल बिजनेस फंक्शंस मस्ट सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन एंड गोल. ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर आपकी एक भी ऑपरेशन और फंक्शन के साथ मैच नहीं करता तो अल्टीमेटली यू आर अनेबल टू मीट योर मिशन एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. सो आप जितना मर्जी उसको कस्टमर कंज्यूमर और एम्प्लॉयज़ को ये समझा लें कि जी वी आर डीलिंग द we develop the best shoes for the athletes, like we take a mission statement of Nike, तो वो उसको तक अंडरस्टैंड नहीं करेगा जब तक कि आपके वो तमाम फंक्शंस यानी कि आपका रॉ मटेरियल उसको डिफेंड करता हो, आपकी प्रोडक्शन हाउस उसको डिफेंड करता हो, और आपकी मार्केटिंग और आपकी जो फाइनेंस है उसको डिफेंड करता हो, देन यू आर एबल टू मीट योर मिशन एंड गोल्स. सो ये ज़रूरी है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आपके तमाम फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्रेस किए जाएँ इन सिंपल टर्म्स में, क्लैरिफाई हों और आपके बिजनेस गोल्स को, यूनिट गोल्स को अचीव करने में वो हेल्पफुल हों. सो एक तो कॉर्पोरेट और बिजनेस यूनिट गोल टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल प्रॉफिटेबिलिटी है, तो हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ज़रूर इसको ऑब्जर्व करना होता है कि बेटर आपकी फाइनेंस जो है वो आपके पास इंक्रीज़ हो, सेल्स इंक्रीज़ हो, प्रोडक्शन टाइप आप इस तरह की रखें जिसमें आपकी कॉस्ट रॉ मटेरियल की रिड्यूस्ड हो, आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बैलेंस्ड हो, पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी मैनेज्ड, और ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके इंक्रीज हो. ये मैंने चारों फंक्शंस की बात आपसे कर दी है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपकी सेल्स को इंक्रीज़ कर रहे हो, द फर्स्ट फंक्शन. प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ योर रॉ मटेरियल, सेकंड फंक्शन. द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव टू रीबैलेंस द फर्म्स पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ द फाइनेंस फंक्शन. or a human resource objective to increase employee training and productivity, this is the fourth function. So I make sure कि आपको ये four functions की जो कनेक्टिविटी है विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल और मिशन ये कनेक्टेड हो, बाउंडेड हो, कोहेजन उसमें कोहेसिव हो एक दूसरे में, ताकि बेटर मिशन और गोल्स जो हैं वो अचीव किए जा सके. सो दिस इज़ द second phase. So functional strategies are designed to integrate efforts focused on achieving the area stated objectives. So you state your objectives first, that we studied in the last lecture, that in lecture 4 that we stated some objectives and goals in terms of marketing plan. We define our mission statement and vision statement, then you design the functional strategy, फिर आप functional strategy बनाते हैं mission vision statement के behalf पे और उसको लीड करते हैं, और द स्ट्रैटेजी मस्ट फिट द नीड्स एंड पर्पसेस ऑफ योर फंक्शनल एरियाज़. और डेफिनेटली अगर आपको मैंने बताया था कि वो सिंगल फ्लो होता है बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी को, जब आप उसकी इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं फंक्शनल एरिया पे, दैन इट्स अ वन साइडेड गेम. when you entered in the game, there is no chance to be get back or to return to your pavilion. You have to play at full strength, and if you have any deficiency you will go to your pavilion automatically, and you will in some manner you will out from the game. So strategy should fit the needs and purposes of the functional areas. Okay, one thing, make sure that be realistic with the organization, resources and environment. जो वेग परसेप्शन है, जो कंफ्यूज परसेप्शन है, जो आपके ऐसे रिसोर्सेज हों जो एग्जिस्ट नहीं करते और आप उसको काउंट कर रहे हैं, उसको मैयर कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, तो इट मीन्स अ ग्रेट डेफिशिएंसी, तो आप उसको मीट नहीं कर पाएंगे. बी कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट यू डिसाइडेड. हमने ये ऑब्ज़र्व किया है, पहले भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपका मिशन स्टेटमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि उसमें अमेंडमेंट के चांसेस रिड्यूस्ड हों, यानी कोई अमेंडमेंट ना हो पाए या ना करनी पड़े. सो कंसिस्टेंट हो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और गोल के साथ आपकी फंक्शनल स्ट्रैटेजी, जो आपका प्रोडक्शन को दिया गया इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से, आपकी मिशन स्टेटमेंट के हिसाब से वैसे आपका फाइनेंस वर्क करे, वैसे आपकी मार्केटिंग वर्क करे, वैसे आपके ऑपरेशंस वर्क करे, वैसे एचआर आप हायर करें, वैसे एचआर की वर्किंग हो, वैसे आपके स्टेक होल्डर्स उसको समझें, एनालाइज करें, परसीव करें, तो आपके मिशन गोल्स और तमाम स्ट्रेटजीज़ का, दो इट्स अ theoretical discussion, but this is the whole road map that you go towards the consumer. ये एक रास्ता है कि आपने कंज्यूमर तक कैसे पहुंचना है.
देखें घर से आपने चलना है जब, तो अपनी जो पैकिंग है या आपकी जो लगेज है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपके सफ़र को आसान बनाती है। अगर आप कोई भी एक चीज़ अपने लगेज में ऐसी इंपॉर्टेंट भूल जाएं जो आपकी डेस्टिनेशन के या आपके ड्यूरिंग ट्रैवल आपको यूटिलाइज होनी है और आप रखना भूल जाएं, तो यू may face some difficulties by or at the spot of your destination। आप वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँच कर वो एडवांटेज नहीं ले सकते, वो आप इंजॉय नहीं कर सकते अगर आपने वो लगेज में वो इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी है। सो मेक दैट थिंग श्योर। दिस डिस्कशन इज़ आई नो theoretical, but this discussion is so much important and it leads to your business, your entrepreneurial activity towards the best place of in the market। तो अगर ये तमाम डिस्कशन हम गोल्स, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स की बात ना करें, स्ट्रेटजी की बात ना करें, तो आप एक ऐसी सफ़र पे जा रहे हैं जिसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, जिसका कोई प्लान नहीं है। सो दीज थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिज़ाइनिंग और मेकिंग योर बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस। अगर आप बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस नहीं करते, आप जल्द अपनी मार्केट से आउट हो जाएंगे और आपको अल्टीमेटली तमाम जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपेंस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आप कुछ अर्न करने के लिए, कुछ वैल्यू लेने के लिए करते हैं, और वो तमाम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस में तब कन्वर्ट होती है जब आपको उस इन्वेस्टमेंट पे कोई वैल्यू वर्थ रिसीव ना हो। द इफेक्ट्स ऑफ ईच फंक्शनल स्ट्रेटजी मस्ट बी वैल्यूएटेड। जो अभी डिस्कशन में कर रहा था कि आपके फंक्शनल स्ट्रेटजी शुड बी evaluated in a manner कि there is effectiveness in it। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, लाइक लार्ज कंपनीज़ हैं, वो अपने हर फंक्शन को, स्मॉल कंपनीज़ में तो ऑपरेशनल फंक्शंस ही ज़्यादा वर्केबल होते हैं, और उसमें बिजनेस यूनिट्स भी इतने ज़्यादा स्कैटर्ड या लार्ज क्वांटिटी में या क्वालिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। तो अफेक्ट शुड बी कंसीडर्ड इन फंक्शन स्ट्रैटेजी। यू आर डेवलपिंग अ फंक्शन स्ट्रैटेजी, सो इफेक्ट शुड बी कंसीडर्ड कि इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा अगर मैं प्रोडक्शन को लूज़ करता हूँ या लैक करता हूँ। फॉर एग्जांपल इन द कोविड-19 सिचुएशन नाउ, मैनी ऑफ कंपनीज जस्ट स्टॉप इट डाउन एंड जस्ट हॉल्टेड देयर प्रोडक्शन हाउसेस। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेस को बंद कर दिया। इफ़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ टोयोटा, इफ़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ एक्सॉन ऑयल, और ऑयल का बहरान आप सुन रहे हैं आजकल कितना है, तो उनके प्रोडक्शन हाउसेस बंद है। इवन पार्को इज़ इन अ प्रोसेस टू क्लोज देयर रिफाइनरी। तो ये इस सिचुएशन में अब अपने प्रोडक्शन हाउसेस की जो स्ट्रेटजी है वो उनकी फ्यूचर प्रोडिक्शन से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, बिकॉज दिस डिज़ास्टर वाज अनबिलीवेबल एंड अनएक्सपेक्टेड एंड नॉट परसीव्ड बाय द कंपनीज। जो कोविड-19 का डिज़ास्टर है वो परसीवेबल नहीं था, और इस वजह से उनको अपने प्रोडक्शन हाउसेस को मार्केटिंग स्ट्रेटजी इवन डाउन साइजिंग करनी पड़ी। सो दीज आर द स्टेजेस दैट मे अकर। सो आपको अपना जो कुशन है दैट शुड बी मेंटेन्ड। आपको एक बॉटल नेक पे आने से बचने के लिए आपको एक कुशन मेंटेन रखना होगा to analyze what situation may occur in future। So effect of function strategy must be evaluated, what your function strategy and how the consequences may be। Okay, now the phase is the implementation that involves the activities that execute the functional strategy। अब जो functional strategy आप बना चुके हैं वो आप implement करने जा रहे हैं। So you need to know that what your external market is and internal market। These are the basic concepts that we analyze in the implementation phase। External market includes the employees, the customers, suppliers, investors, potential employees, the society at large। These are the customers and suppliers are the external market players, whereas internal market players are employees, managers, executives। So the inside the company you are dealing with the people of your own and you have your own employees so you must know the internal market, the knowledge of your employees, the knowledge of your managers and executives। if अगर आपके मैनेजर एम्प्लॉयज़ को आपकी कंपनी की करंट सिचुएशन के बारे में और आपकी करंट मिशन स्टेटमेंट और आपकी स्ट्रेटजी के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में इल्म नहीं होगा, देन दे आर अनएबल टू सक्सीड इन द अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एक बंदा जो डिज़ाइन करता है और उसको फंक्शनल एरिया पे लेके जाता है तो वो एम्प्लॉयज़ ही होते हैं, वो आपके एग्जेक्टिव्स ही होते हैं, मैनेजर्स ही होते हैं, जिसने उनको एक्टिवेट करना होता है और उस एक्टिवेशन से वो आप लीड करते हैं टुवर्ड्स एन एक्सटर्नल मार्केट। सो फर्स्ट थिंग यू मस्ट रिलाई ऑन योर इंटरनल मार्केट। आपको उनको R&D प्रोवाइड करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यू हैव टू ट्रेन दैम, यू हैव टू डेवलप द स्किल्स ऑफ योर एम्प्लॉयज़ टू मेक श्योर दैट दे हैव द बेस्ट नॉलेज इन द मार्केट। और उनकी एनालिसिस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वो कैसे होगा? व्हेन यू हैव द नॉलेज, यू हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ योर
प्रोडक्ट सर्विसेज एंड द स्ट्रेटजी यू आर डेवलपिंग, सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पे ही स्ट्रेटजी जो है वो नोन नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी नोन बाय द इंटरनल मार्केट एज वेल. The company must rely on its internal market for a functional strategy to be implemented successfully. So this is the core key concept, that the execution is in the hands of your internal market, like your employees, managers and executives. For this reason, organization often execute internal marketing activities designed to gain employee commitment and motivation to implement functional plans. They work for the training, they work for the development and training. And you know what is the difference between training and development? The training is done or designed for current scenario, for current scenario, for current situation, whereas development is done for the future. The training you get today will be utilized in future, is called development. So development is for future, and training or the skills you implement or the skills you teach to your employees for the current or today's situation. So organizations execute internal marketing activities to develop the motivation level of their employees, their manager, executives, and for the implementation or functional plans. जब तक आपके employees motivate और committed नहीं होंगे, वो आपके functional plans के मुताबिक नहीं चल सकते. So the motivation of your employees is the most key point or key knowledge or key area where you can hit and you can get the best implementation of your business unit strategy. Okay, now the valuation and control phase, because you need to evaluate and control after implementing any strategy. This is the beginning and ending of any strategy. कोई भी चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको देखा जाता है कि evaluate किया जाता है कि what are the consequences and results we get from by implementing that strategy. So in the big picture, the critical issue in this phase is coordination among functional areas. ये कब वो problem create करता है जब coordination आपके functional areas में ना exist कर रही हो. Same is the case with the university. If admission department is not directly communicated or interlinked with the academics, then it's impossible to understand how many strength is now getting in this session and how many students are going to get admission, what will be the attendance sheet and what will be the scenario for the subjects, how many students have some 4-year bachelor and how many students has the MBA 1.5 or MBA 3.5 level. So this is the interlink importance that I delivered in terms of university. So timely distribution, अगर हम इसकी practical example लें, if you need to distribute your product timely distribution and product availability almost always depend on accurate and timely production. आपकी timely distribution और product availability तब होगी जब आपकी production time पे होगी. So ये interlinked है. So the selling of or marketing of the product, so depending on the production of the product. By maintaining contact with the production manager, the marketing manager helps to ensure effective marketing strategy implementation. तो ये ज़रूरी है, अगर वो कांटेक्ट नहीं रखेगा मार्केटिंग मैनेजर विद द प्रोडक्शन मैनेजर तो वो इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा. टाइमली उसकी नई कम्युनिकेशन होगी जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है वो जल्द अननोन रहेगा उस अपने इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट, एंड इन लॉन्ग रन इंक्रीज जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो वेल कर पाएगा अगर मार्केटिंग मैनेजर रब्ता रखता है अपने प्रोडक्शन मैनेजर के साथ. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. और ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज यू नीड टू हैव एन वैल्यूएशन एंड कंट्रोल, और आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी तब इम्प्लीमेंट होती है देन बेस्ट कम्युनिकेशन हैज़ बीन डन विद इन द फंक्शनल एरियाज. सो the key to coordination क्या है जी? is to ensure the functional areas maintain open lines of communication at all times. और ये सक्सेसफुल बता चुका हूँ मैं आपको कि अगर ये ओपन लाइन कम्युनिकेशन नहीं है, there is a gap, तो it means you are in a troublesome. Maintaining a customer focus is extremely important जी. अगर आप ये अपने कस्टमर फोकस नहीं रहते, अपने डिपार्टमेंट को नहीं रखते थ्रू आउट द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, so it's impossible to get the satisfaction level of your consumer, but especially so during the implementation, evaluation and control phases of the process. And it's more important to get the customer focus in implementation and evaluation and control process phase जो भी हम पढ़ रहे हैं. इस फेज़ के अंदर evaluation and control में तो definitely you have to be focused on your customer.
कि आपने वैल्यूएशन जो लेनी होती है वो कस्टमर से लेनी होती है, बिकॉज यू आर डेवलपिंग द स्ट्रेटजी फॉर देम. So you need to analyze that what your customer is thinking and what the perception of your customer regarding your strategic planning decisions. Functional managers should have the ability to see the interconnectedness of all business decisions and act in the best interest of the organization and its customers. So the functional managers, whether it's a financial manager or a marketing manager or a HR manager or a operational manager, should know the interconnectedness of the business decisions. अगर एक business decision ऊपर से rotate होता है, like the raw material is going to be an expensive, तो उसका effect production पे भी पड़ेगा, उसका finance पे भी पड़ेगा, उसका HR को भी बताना पड़ेगा, marketing भी उसकी महंगी होगी. So these are the impact of the business decisions on the function or function areas. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनल एरियाज हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड. ये बेस्ट कम्युनिकेशन जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में टू वे एरो वाली कहानी बताई थी, एक डायग्राम जो हमारी हिरार्की बेस थी जिसमें टू वे एरो था, तो वो इंटरकनेक्टेडनेस को शो करता है कि आपके जो फंक्शंस हैं विद इन द बिजनेस दैट शुड बी और दे शुड बी इंटरकनेक्टेड. So valuation and control occur after a strategy. Definitely when your strategy is in process you are unable to evaluate, so strategy should be evaluated after implementation. Occurs after strategy has been implemented. Evaluation and control is both an ending and beginning of the serve as an ending and beginning of the strategic planning process. क्योंकि evaluation जो implementation phase है वो incomplete होता है. Implementation of any strategy would be incomplete without an assessment of its success and the creation of control mechanism to provide and revise the strategy to or its implementation or both if necessary. ये इम्पॉसिबल है कि आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं और आपको उसके वैल्यूएशन और कंट्रोल प्रोसेस के बारे में ना पता हो. यानी कि ये ऐसे ही है कि सब्जेक्ट पढ़ाना और उस सब्जेक्ट के बारे में एवेल्यूएट करने का प्रोसीजर ना पता होना. मैं आप यानी कि एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया ना पता हो कि ये सब्जेक्ट पे कैसे पता चलेगा कि एक बच्चा जो है उस सब्जेक्ट को बेस्ट ग्रैब कर लेता है या बेस्ट अंडरस्टैंड कर लेता है. उसका बेस्ट वे जो HEC ने निकाला हुआ है कि जी आप मिड टर्म और फाइनल टर्म ले लें, देन यू बेस्ट एनालाइज कि विच स्टूडेंट इज़ गोइंग टू बी the best in the subject and who is not going best or attending the lectures or understanding the lecture. So this criteria is developed before delivering the lecture or designing the lecture system. ये तब हुआ होगा जब lecture system या semester system बना होगा. So they develop the valuation control system first, then they going to implement the strategy. और फिर बाद में उसी valuation control system जो बनाया होता है उसके ऊपर evaluate होता है आपकी कोई भी strategic planning process. तो इसलिए इसको ending और beginning कहा गया है. यानी कि beginning पे ये डिज़ाइन होता है कि ये जो strategic planning process हमने बनाया है इसको evaluate अब कैसे करना है. कंज्यूमर से पूछना है, कस्टमर से पूछना है कि प्रोडक्ट की सेल पे डिपेंड करना है कि आपने उसके फीचर्स या सेलिंग या कस्टमर कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करना है या उसकी रिटर्न पे डिपेंड करना है कि कितना जो प्रोडक्ट है ख़रीदने के बाद वापसी हमें ख़राब तौर पे आता है. सो व्हाट विल बी द मैकेनिज्म. सो इसीलिए वैल्यूएशन एंड कंट्रोल इज़ बोथ एन एंडिंग एंड बिगिनिंग, बट इट एक्टिवेटेड और यूटिलाइज दिस प्रोसेस अकर्स आफ्टर द स्ट्रेटजी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड. So I hope you better understand these functions. Next lecture we will move towards the marketing plan.